अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज हम सीखेंगे एक मॉडल वर्ब यूज़ टू, ओके, जिसे हम यूज़ करते हैं माजी के लिए यानी पास्ट के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, इट इज़ अ मॉडल वर्ब विच इज़ यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस। यानी ये एक मॉडल वर्ब है जिसे हम पास्ट यानी माजी के काम वगैरह या माजी की आदत वगैरह बताने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाय पिया करता था, आई यूज़ टू टेक टी। यानी मैं माजी में पिया करता था, अभी नहीं पीता हूँ। तो इस टाइम हम यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब यूज़ टू। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स इफ यू वांट टू मेक अ सिंपल सेंटेंस or simple example. Okay, just follow this formula. Okay, first we take subject, then used to the modal verb. Okay, then verb, and in the last we put object. Okay, now see the example. He used to cry alone. वो तन्हाई में रोया करता था. He used to cry alone. Now see the second sentence. I used to play football. मैं फुटबॉल खेला करता था, यानी माजी में खेला करता था, अभी नहीं खेलता हूँ। तो इस टाइम हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। नाउ सी द थर्ड एग्जांपल, शी यूज टू कुक फूड। वो खाना पकाया करती थी, यानी वो माजी में पकाया करती थी, अभी नहीं पकाती है। तो इस टाइम हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब यूज टू फॉर द पास्ट हैबिट्स एंड पास्ट एक्शंस. Now see if you want to make a negative sentence. Okay, now see, first you have to follow the formula. First we take subject, then did not, then used to, verb, and in last we use object. Now see the example. Okay, I did not used to play football. मैं फुटबॉल नहीं खेला करता था. Now see, first I took subject. Okay, I as a subject, then did not to show negative sentence, then used to and play, and in last I used the object football. I did not used to play football. She did not used to cook food. वो खाना नहीं पकाया करती थी. She did not used to cook food. He did not used to cry alone. वो तन्हाई में नहीं रोया करता था. He did not used to cry alone. Now see if you want to make an interrogative sentence. Okay, now follow the formula. Okay, first we take did, then subject, then used to, then verb and object, and in the last we put question mark. Now why we are putting question mark in the last of sentence? Because it is an interrogative sentence. ये interrogative sentence है, इस वजह से हम लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ताकि सवालिया जुमला जाहिर हो. ओके, नाउ सी द एग्जांपल. Did he used to cry alone? क्या वो तन्हाई में रोया करता था? Did he used to cry alone? Did she used to cook food? क्या वो खाना पकाया करती थी? Did she used to cook food? Did I used to play football? क्या मैं फुटबॉल खेला करता था? Did I used to play football? Now if you want to make some sentences, just follow the same formulas and you can make some sentences easily. So if you have not subscribed to my channel yet, so subscribe it now so that you can get all my lectures. Thank you and Allah Hafiz.